Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and I'm starting with the series for UGC NET, and for that I'm basically wanting to cover paper 2. So paper 2 is about English literature, and let's have a brief analysis of the syllabus which is there in UGC NET UGC NET for English literature. So first there is a huge section which is covering British literature, and which consists of first it is Old and Middle English, then Age of Chaucer, and then there is Age of Revival, and then there is Elizabethan Age. There are some poets, dramatists, and then you have essayists of that age. Then Jacobean Age, which is beginning from 1600. Then there are dramatists of that Jacobean Age. Then there are poets of the Jacobean Age. सो ब्रिटिश लिटरेचर में है ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश पढ़नी है, फिर उसके बाद एज ऑफ शॉशर पढ़ना है. ओल्ड और मिडिल इंग्लिश में एंग्लो सेक्शन पीरियड क्या था, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम्स, स्टाइल्स, एंग्लो सेक्शन पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, एंग्लो नॉर्मन पीरियड का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम्स कौन सी थी उस टाइम पे जो लिखी जाती थी, स्टाइल कौन सी थी, एंग्लो सेक्शन वर्क्स पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, शॉशर की एज के बारे में पढ़ेंगे जो 1300 से 1400 एडी तक चली, जिसमें शॉशरियन एज का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम्स, स्टाइल, जॉफरी शॉशर के बारे में पढ़ेंगे, विलियम लैंगलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ेंगे, जॉन मैंडविल के बारे में पढ़ेंगे, जॉन गावर के बारे में पढ़ेंगे, थॉमस हॉकलीफ के बारे में पढ़ेंगे, जॉन लाइट गेट. देन एज ऑफ रिवाइवल विच began from 1400 and it lasted till 1550. तो एज ऑफ रिवाइवल का इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम्स, स्टाइल, एरेमस, थॉमस मोर, विलियम टिंडेल, रिचर्ड टोटेल, थॉमस व्याट, हेनरी हार्वर्ड, रॉगर एस्केम, थॉमस एलायट, थॉमस मेलोरी, विलियम डनबर. फिर एलिजाबेथन एज में हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ एज के बारे में, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था, थीम्स कौन कौन सी यूज़ होती थी, स्टाइल्स कौन कौन सी थी, पॉपुलर बाइबल ट्रांसलेशंस जो उस टाइम पे हुए. उसके बाद पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एलिजाबेथन एज में फेमस थे, जैसे कि एडमंड स्पेंसर, थॉमस सैकविल, फिलिप सिडनी, माइकल ड्राइटन. ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश थिएटर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या था, और जो शुरुआती एलिजाबेथन प्लेस थे उनके बारे में पढ़ेंगे. We will also learn about Christopher Marlowe, who was an important writer during Elizabethan period, Robert Greene, Thomas Nash, John Lyell, Thomas Lodge, George Peele, Thomas Kidd, William Shakespeare. Then we'll read some important essays like Francis Bacon, Richard Hooker, Walter Raleigh, Richard Hakluyt, Samuel Purchas, John Fox, William Camden, जॉन नॉक्स. फिर हम जैकोबियन एंड कैरोलिन एज में पढ़ेंगे कि जैकोबियन एंड कैरोलिन एज थी क्या, उस टाइम का हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम्स, स्टाइल्स, कुछ ड्रामेटिस्ट जो जैकोबियन क्लब को बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज को बिलोंग करते हैं, जैसे बैन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, बेयरमेंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर, फिलिप मैसेनर, जॉन फॉर्ड, जेम्स शर्ले, जॉन मैस्टन. पोएट्स के बारे में जैसे कि जॉन डन, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, एब्राहिम कॉले, थॉमस कैरियो, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक. Then we can talk about civil war and interregnum, means after that. Then we'll talk about restoration age, and then there is enlightenment age, and there is romantic age which lasted till 1850, and after that we'll read about Victorian age. So in civil war and interregnum we have सिविल वॉर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद का जो पीरियड था उस टाइम पे हिस्टोरिक बैकग्राउंड कैसा था, थीम्स कैसी थी, स्टाइल कैसा था. जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे, जॉन बेनियन के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट बर्टन के बारे में पढ़ेंगे, थॉमस ब्राउन, जेरेमी टेलर, रिचर्ड बैक्स्टर, आइजैक वॉल्टन, थॉमस फुलर. रिस्टोरेशन एज में हम पढ़ेंगे
कि और कुछ प्रोज राइटर्स। पहले तो ये पढ़ेंगे कि व्हाट वाज रिस्टोरेशन एज, उस टाइम पे हिस्टोरिक बैकग्राउंड कैसा था, थीम्स कैसी थी, स्टाइल कैसी थी। फिर प्रोज राइटर्स जैसे कि जॉन ड्राइडन, सैमुअल बटलर, जॉन एन एवेलिन, सैमुअल पेपिस, जेरेमी कॉलियर, विलियम डैम्पलर, John Wilmot, Thomas Rymer, and then some dramatists like George Etheridge, William Bitchlery, George Farquhar, John Benwerk, Colby Cibber, Thomas Otway, William Congreve, Ephra Ben, John Gay. Then comes the Enlightenment age, in which we have the introduction of the Age of Enlightenment, its historic background, some of the themes and styles, and some prose writers like Alexander Pope, Jonathan Swift, Richard Steele, Joseph Addison, Samuel Johnson, and then some novelists like Daniel Defoe, Henry Fielding, Samuel Richardson. Then we have Tobias Smollett, Lawrence Stern, Charlotte Lennox. Then poets like Thomas Gray, Oliver Goldsmith, William Cowper, Robert Burns, William Blake, Thompson, William Collins, George Crabbe, James Macpherson, Thomas Chatterton, then Thomas Percy, John Stack. Then comes the Romantic Age, in which we have introduction of Romantic Age, its historic background, themes, styles. We have some poets like William Wordsworth, Samuel Coleridge, Robert Southey, Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats, John Clare. They all belong to Romantic Age. Then prose writers like William Hazlitt, Leif Hunt, Charles Lamb, Thomas De Quincey, novelists like Walter Scott, Jane Austen, Walter Savage Landor, Mary Shelley, Anne Radcliffe, Horace Walpole, Fanny Burney, William Godwin, Richard Sheridan. They all belong to रोमांटिक एज। अब हमें पढ़ना है विक्टोरियन एज। इसमें इंट्रोडक्शन टू द विक्टोरियन एज, इट्स हिस्टोरिक बैकग्राउंड, थीम, स्टाइल। कुछ पोएट्स जैसे कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हु बिलोंग टू विक्टोरियन एज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथन वेरेट ब्राउनिंग, डेंटे गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम मॉरिस, A.C. Swinburne, G.M. Hopkins, Edward Fitzgerald, novelists like Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, George Eliot, Charles Reade, Anthony Trollope, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, then Wilbur Linton, Charles Kingsley, Elizabeth Gaskell, R.D. Blackmore, George Meredith, Thomas Hardy, R.L. Stevenson, Lewis Carroll, William Beatty Collins, Arthur Conan Doyle. Then some essays like Thomas Babington Macaulay, Thomas Carlyle, John Ruskin, Matthew Arnold, J. H. Newman, Walter Pater, Oscar Wilde. So all these belong to the Victorian age. Then comes the modern age from 1900 to 1950. So firstly we will read about what it was, the modern age, historic background क्या था उस टाइम पे, क्या चल रहा था, कौन से important events थे, themes क्या थी जो उस टाइम पे prevalent थी, style क्या थी. Then comes novelists like Joseph Conrad, George Orwell, James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Graham Greene, E.M. Forster, Ford Madox Ford, Arnold Bennett, H.G. Wells, J.M. Barrie, Rudyard Kipling, Samuel Butler. Then some dramatists like John Galsworthy, G.B. Shaw, T.S. Eliot, Sean O'Casey, J.M. Singe, poets like W.H. Auden, W.B. Yeats, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, Rupert Brooke, Robert Graves, Dylan Thomas, John Masefield, Alfred Noyes, A.E. Houseman. Then comes the postmodern age, which lasted from 1950 to 2000, which has introduction to postmodern age, historic background, themes, styles. Novelists like Agatha Christie, Jean T. Binterson, J.R.R. Tolkien, Bram Stoker, Christopher Isherwood, Burt Bertrand Russell, J.M. Priestley, Somerset Maugham,
We have Doris Lessing, J.K. Rowling, William Goldings, Ian McEwan, Lawrence Durrell, Graham Swift, Martin Arnis, Kingsley Amis, Iris Murdoch, John Fowles, Muriel Spark, A.S. Beat, Malcolm Bradbury, Angela Carter, Patrick Kavanagh, J.P. Don Levy, Anthony Powell, David Story, Joyce Carey, August Wilson, Anthony Burgess, Peter Ackroyd, dramatist like Ellen Bennett, Noel Coward, Christopher Fry, Harold Pinter, Samuel Beckett, Edward Bond, Tom Stoppard, Terence Rattigan, Arnold Wesker, John Osborne, Carol Churchill, Joe Orton, poets like Seamus Heaney, Ted Hughes, Philip Larkin, Roy Fuller, Thom Gunn, J.H. Bryan, Geoffrey Hill. So that was it in British literature. And after that, in the next series, I'll be telling about American literature. Thank you, everyone.